Hello, welcome back to my channel. Today I am taking the class for class 10 laws of inheritance, right? Here I am taking the chapter of class 10, the first. What is genetics? Students, you know what is genetics? Genetics is the branch of biological science dealing with the study of principles of heredity. When I ask principles of heredity, who is known as the father of heredity? As you already know, Gregor John Mendel, he is known as the father of heredity. What is heredity? Heredity includes those characters which are transmitted from one generation to the other generation. Heredity includes those characters which are transmitted from one generation to the another. So transmission of these biological characters from parents to the next generation is called inheritance. So first we'll start and go with the Mendel's laws of inheritance. Mendel, known as the father of genetics, he gave three laws of heredity. First, law of dominance. Second, law of segregation. And the third, law of independent assortment. According to the law of dominance, this law states in if we cross two plants having the pure characters, organisms with pure contrasting characters, we take only one character as an consider only one character of the pair that appears in the first generation. The character which appears in the first generation is called dominant character, and the character which does not appears or lies latent, it is known as the recessive character. According to law, that is called, because only one character. What is dominant character? The character which expresses itself in the first generation. The character which expresses itself in the first generation, it is called dominant character. And the character which does not expresses itself in the first generation, it is called recessive character. Same, you have the defined here that what is the recessive or the dominant character. As you see here, dominant. In crossing between a pair of organisms with pure contrasting characters, only one character of the pair appears in the F1. F1 generation means first generation. So the character which appears is called dominant, and while the other lies later, means which is hidden, which is not represented over there, that is called recessive. But this character does not affect in any way, and in the further generation again it starts segregated without dominated over the dominant character. In the other generation it expresses itself as the same. Okay, now first you see in the law of dominance, when we take two pure contrasting character, capital T, it is a pure tall plant. It is crossed with pure dwarf plant, that is small t and small t. When we take pure tall plant cross with the dwarf plant, then what happens? The gametes formed here, capital T, they are the homozygous. Capital T, small t, they are also homoparent. When gametes are formed, it is capital T and small t is capital T. Here small t, from here the gametes will be formed. And when they cross each other, then the plant which is obtained in F1 generation, it has capital T and small t. Because Mendel observed that plants which are obtained in the first generation, they are all tall plants. As all plants are tall, so tallness is the here dominant character and dwarfness is the recessive character. And these plants, they are known as hybrid, because if these plants cross again in the next generation, then we are getting all different types of the plant, tall plants also, dwarf plants also, hybrids also. So here this states the law of dominance. I hope it is clear. Now the next comes to the law of segregation. According to the law of segregation or purity of this law states when a pair of contrasting characters are brought together in hybrid union, when two contrasting characters are brought,
Naturally, in the first generation, the plants which we are getting, they are all hybrid. As you see here, capital T and small t, it is a hybrid plant. And when the two characters, they stay together without mixing and separate each other when the hybrid forms the gametes. मतलब ये जो करेक्टर्स जो मिक्स हो गए, इसमें टॉलनेस और जो ड्रॉफ्टनेस का करेक्टर है, ये रिप्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ये उसके ऊपर हावी भी नहीं होता है, ये एज इट इज रहता है, और अगले जनरेशन में ड्रॉफ्टनेस भी सामने आती है. द गैमेट्स दे आर ऑलवेज प्योर फॉर ए पर्टिकुलर डे. गैमेट्स दे नॉट गेट ओवरलैप्ड बाय एनी करेक्टर. इस स्मॉल टी पर कैपिटल टी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, जीन्स रहते हैं. बिकॉज गैमेट्स में कैरी आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव, बट नॉट बोथ. क्योंकि गैमेट्स एक ही कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं, या तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर करेंगे या वो रेसेसिव करेंगे, लेकिन एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को ओवरलैप नहीं करता है, बिकॉज इट इज हैप्लॉइड. And haploid genes, as you know, you have studied in the cell division, haploid cells is not aware. When only diploid chromosomes are present, genes are present in the chromosome, they are present in pairs. हमेशा पेयर्स में होते हैं. तो जो सिंगल पेयर होता है हैप्लॉइड हमेशा गैमेट्स बनते हैं, और वो हैप्लॉइड गैमेट हमेशा प्योर होता है, वो दूसरे हैप्लॉइड गैमेट से किसी भी तरह से उसका कोई इफेक्ट नहीं होता. सो दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. Suppose when we take two plants, capital tall plants represented by capital T and capital T, dwarf plants represented by small t and small t. Then here gametes are found capital T and small t, and when they are crossed, then in first filial generation we get all hybrid plant, that is capital T and small t. Here, as they are tall plant, so tallness is the dominant character, dwarfness is the recessive, because it is not represented by the plant. But these plants are hybrid, how we come to know? Now when these plants are crossed itself, ये hybrid है, hybrid को अगले जनरेशन में हमने फिर क्रॉस किया. जब हाइब्रिड को हमने क्रॉस किया तो इसमें हमको गैमेट्स मिले दो तरह के, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. इसमें देखिए दोनों गैमेट्स, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों गैमेट्स एक तरह के थे. यहाँ पर हाइब्रिड को जब हम क्रॉस करेंगे तो इसमें देखिए दो तरह के गैमेट्स हो गए. ये देखिए गैमेट्स है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. जब इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो आइदर दिस विल क्रॉस विद दिस, then the capital T pure tall plant. If capital T crossed with the small t, then we will get the hybrid. If a small t crossed with capital T, again we will get the hybrid. But if this small t crossed with the small t, we will get pure dwarf plant. This shows that gametes are not affected. Though here we had all tall plant, यहाँ पर कोई भी नहीं था, दोनों लंबे थे, दोनों ही लंबे पेड़ हमने लिए थे, हाइब्रिड थे, लेकिन चूंकि वो हाइब्रिड थे इसलिए यहाँ पर हमको एक प्योर टॉल मिला, दो हाइब्रिड मिले और एक प्योर डॉग. तो जीनोटिपिक रेशियो जो है वो 1:2:1. और अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो इसमें फिनोटिपिक रेशियो, ये है जीनोटिपिक, और इसमें फिनोटिपिक रेशियो जो होगा वो होगा 3:1. क्यों? क्योंकि ये 3 टॉल प्लांट होंगे और एक ड्रॉप होगा. ये हमें कैसे पता चलेगा? जब इसको हम फर्दर क्रॉस करेंगे तो नेक्स्ट फीलियल जनरेशन में हमको यही मिलेगा, और अगर हम इसको और इसको क्रॉस करेंगे तो हमें जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन थे उसके प्लांट्स मिलेंगे. इससे ये पता चलता है कि ये जो गैमेट्स है वो रेसेसिव है, लेकिन रेसेसिव कैरेक्टर किसी भी तरह से डोमिनेंट कैरेक्टर उसको ओवरलैप नहीं करता है, यानी उसको किसी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. आई होप इट इज क्लियर. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट. दिस इज द सेकेंड लॉ. नाउ वी कम टू द थर्ड लॉ. थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये भी उसी का ही मॉडिफाइड रूप है. इंडिपेंडेंट यानी कि हर कैरेक्टर अपने आप में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है. इस जगह पर हमने सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसीडर किया है, इसलिए इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट इज आल्सो नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनो मीन्स सिंगल. When we consider only one character at a time,
then the cross is said to be monohybrid cross. Here we have considered length of the plant. When we considered only length of the plant, when pure tall plant cross with pure dwarf plant, in the first generation we are getting all tall plant, but all these plants are hybrid. But when these hybrids are further self-crossed in the second generation, then we get 3 tall and 1 dwarf. And among in these 3 tall also, 1 is pure tall, 2 are hybrids, and 1 is pure dwarf plant. That is the monohybrid cross. Now the second law of independent assortment. It is also known as dihybrid cross. It is also known as dihybrid cross. Now here what happens when the parents differ from each other in 2 or more pairs of contrasting character. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने सिर्फ एक करेक्टर कंसीडर किया, जबकि डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम डाई मीन्स टू, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 करेक्टर्स को कंसीडर करते हैं. When we cross 2 or more another, the inheritance of one pair of character is independent to that of the other. तो जो इनहेरिटेंस यानी कि वन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर एक करेक्टर अपने आप में दूसरे में टोटल इंडिपेंडेंट होता है, उसके ऊपर किसी दूसरे हैप्लॉइड करेक्टर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मेंडल ने इसमें यहाँ पर 2 करेक्टर्स कंसीडर किए थे, एक कलर और दूसरा शेप. When we are considering 2 characters at time, yellow cotyledons and round seeded plants, and with the plant green cotyledons and wrinkled seeded. Yellow cotyledons and round seeded represented by capital Y, capital Y, capital R, capital R. And green cotyledons and wrinkled seed, they are represented by small y, small y, small r, small, because genes are always taken in pairs. राइट. तो जब हम प्योर येलो एंड राउंड सीडेड प्लांट क्रॉस कराएंगे प्योर ग्रीन और लिंकल्ड सीड पैटर्न, तो यहाँ पर गैमेट्स क्या बनेंगे, या तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, या एक ही तरह का गैमेट होगा. यहाँ पे भी स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, इसी तरह का गैमेट. ये दोनों एक ही हमारे गैमेट्स हो गए, ये हमारे गैमेट बने. ना इस गैमेट को जब फर्स्ट फीलियल जनरेशन में आएंगे तो हमको हाइब्रिड प्लांट मिलेगा. Capital Y, small y, capital R, small r. And all plants we are getting in the first generation, they are yellow and round seeded. As all plants in the first generation, they are yellow and round seeded plant. So yellow and round seeded plant, it is the dominant character. Green and wrinkled, it is the recessive, because the character which expresses itself in the first generation is called the dominant character, and character which does not expresses itself in the first generation, it is called the recessive character, but it is not overheaded by the other. अगर जेनेटिकली कैरेक्टर्स होते हैं तो वो उसको ओवरलैप नहीं करते, उसमें जो कहते हैं ना स्लीपिंग फेस में रहता है, और लेकिन जब भी वो कैरेक्टर आएगा तो वो अपने आप को पूरा एज ए होल रिप्रेजेंट करेगा. मान लीजिए ये हमने येलो और राउंड सीडेड प्लांट मिले. अब अगर हम ये F1 प्लांट्स जो हमको प्लांट मिले हैं हाइब्रिड, इनको अगर हम सेल्फ क्रॉस करेंगे तो देखिए ये मेल है कैपिटल वाई, अगर इसमें एक तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर बनेगा, या स्मॉल वाई कैपिटल आर बनेगा, या स्मॉल वाई स्मॉल आर बनेगा, यही गैमेट्स बनेंगे. इसी तरह यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, small y capital R, small y small r. Both the gametes are formed. Now here in the second filial generation, the plants we obtain first. यहाँ पे y r y यानी capital Y capital Y capital R capital R. Here capital Y capital R small r. इसको करेंगे capital Y small y capital R small r. यहाँ पे capital Y small y capital R small r. ठीक है. अगले इसमें जाएंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर नहीं, कैपिटल वाई इसमें भी स्मॉल आर होगा, ये स्मॉल आर. यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर.
यहां पर भी देंगे कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ये स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये यहाँ पे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई, कैपिटल आर। तो यहाँ पर आप देखिए स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ये ओवरहेडेड नहीं हुआ, ये अपने आप, ये एक प्लांट मिला हमें, रिंकल्ड एंड ग्रीन, वी गॉट वन प्लांट। अब इसमें येलो एंड राउंड, येलो एंड यानी कि जिसमें कैपिटल वाई, कैपिटल आर हो, जो कैपिटल वाई, कैपिटल आर, येलो एंड राउंड, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आपका कैपिटल वाई है। तो ये 9 प्लांट्स हैं येलो और राउंडेड। लेकिन इसमें भी देखिए फर्दर जेनेटिक, अभी हम सिर्फ एक्सटर्नली देख रहे हैं, दैट इज द हियर वी आर वाचिंग ओनली phenotypic ratio, phenotypic ratio, ये जो रेशो हमने लिखा है ये फिनोटिपिक रेशो है। ये देखिए फिनोटिपिक रेशो 9:3, तो उसमें 9 हमें येलो दे। अब येलो एंड रिंकल्ड मतलब कैपिटल वाई, स्मॉल आर। अब कैपिटल वाई और स्मॉल आर ये तो नहीं है, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, ये है कैपिटल वाई, स्मॉल आर, येलो एंड रिंकल्ड, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, ये है, और ये कहाँ गया, एक और आना चाहिए था। येलो एंड रिंकल्ड यानी स्मॉल आर होगा दोनों में, ये है कैपिटल वाई, स्मॉल आर। ये देखिए येलो और रिंकल्ड, येलो, स्मॉल और रिंकल्ड, येलो एंड रिंकल्ड, ये फिनोटिपिक रेशो है। अब आता है राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन मीन्स स्मॉल वाई, कैपिटल आर। तो इसमें आप ये देखिए स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ये आपके तीनों डिफरेंस, ये हो गए आपके राउंड एंड ग्रीन। और एक ये आपका रह गया है, ये वाला सिर्फ है, ये रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये फिनोटाइप। तो इंडिपेंडेंट यानी कि जैसे ही क्रॉस बनते हैं, करेक्टर्स होते हैं, सारे करेक्टर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। जब हम दो करेक्टर्स को कंसीडर करेंगे, जब हमने एक करेक्टर को कंसीडर किया तो F2 जनरेशन में हमें दो तरह के प्लांट मिले, और जब हमने दो करेक्टर्स को कंसीडर किया तो F2 जनरेशन में हमें 4 तरह के प्लांट मिले, येलो एंड राउंड, येलो एंड रिंकल्ड, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड I hope it is. And the phenotypic ratio is 9:3:3:1. This I have discussed here today. Mendel's laws of inheritance, all the 3 laws. Any doubt, anywhere, ask me in the comment section. Any question you have. Further in the chapter sex linked, we will discuss in the next video. Again, we will meet in the next video. Thank you.